I'm good. How are you? I am good too. So thank you for joining me on I am Viber. It's my pleasure. Okay, so shall we start? Yeah, of course. Okay. So first of all, I would like to introduce yourself to our audience. Okay. Uh, so my name is Mansi Katwalia, and I am a co-founder of Prima Consultants. It's an HR consulting firm, and it's been 8 long years that we've started this with a certain reason or background in mind. And yes, I mean I'm very happy and glad to be part of this podcast today. ओके थैंक यू सो मच सो अभी आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो एचआर से स्टार्ट हुई है एंड वहाँ से जो प्रीमा कंसल्टेंट की को फाउंडर तक का जो जर्नी थी वो कैसी रही है अभी तक So Sakshi, let me tell you, I mean, honestly, I'm an MBA in finance and not HR. So journey बहुत ही mixed थी. मतलब I was actually placed as a research analyst in one of the research consulting firm, and therein my HR approached me and she asked me if I could join her in the HR team, keeping in mind my background. And I think that was the time wherein I was very confused and to see, whether this is something which is going to be beneficial for me in the future, and also keeping in mind with no HR degree. But yes, I mean, I took that risk and chance, and finally, here I am today. So I've landed up in a consulting firm again. I mean, once I left from the previous month, and I've headed HR for good 6 years there. The journey was good. I mean, it started with 35 odd people. I was the first HR, first female. Uh, and I think from 35 to 200 in a span of 6 years, uh, got to see a lot of ups and downs during that time, and I think that was the turning point wherein I realized that now I have to take a break. And I mean, there were things in the background. Uh, my kid needed me then for the main school admissions, and I think that was the turning point wherein my journey of Prima Consultant started. I was just thinking, let's do something, and in a month's time, we incorporated Prima. So I think the journey was full of ups and downs, but I think I'm glad where I am today. ओके राइट सो ये प्रीमा कंसल्टेंट जो है इसको स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया आपका Okay, so when I left my firm, I actually was approached by another consultancy to work as a director. There was a time wherein, I used to go to my friend's place, work there in a certain piece. And I think that was the time when she approached me and she said, "Ki, Mansi, why don't you, start something of your own? You've given so much of hard work to this firm. If you start something of your own with such a strong HR background, why can't?" So that was the time wherein I thought that, let's pull her in, and, we co-founded Prima Consultants together. So I think that was the time wherein this realization came in, and finally we are in it. okay so what do you think what is the biggest difference in the leadership hiring and in the normal hiring See, normal hiring requires certain skill set, experience. But when I talk about leadership hiring, it majorly focuses on strategic thinking, cultural fit, decision making capability, team building capability, business impact. Honestly, एक leadership hiring ना पूरी organization की direction change कर सकती है. So yeah. ओके राइट सो आज कल हमने देखा कि बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो हायरिंग की है लाइक जो आपको हायरिंग प्रोवाइड करती है जो आपको कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है तो अभी आज के टाइम में 2026 में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हायरिंग जो ये कंसल्टेंसीज होती है ये कर रही है अभी सी सबसे कॉमन मिस्टेक जो है वो है कि हायर फास्ट एसेस लेटर. तो स्टार्टअप्स ना अर्जेंसी में कभी कभी रोल क्लैरिटी नहीं कर पाते हैं, तो कल्चरल फिट इग्नोर कर देते हैं. दे फ्यूचर स्केलेबिलिटी को कंसिडर ही नहीं करते हैं. सो आई थिंक राइट हायरिंग शॉर्ट टर्म नीड और लॉन्ग टर्म विजन दोनों को देखकर होनी चाहिए. ओके राइट और अभी 2026 चल रहा है एज यू नो और एआई का बहुत ज़्यादा भी चल रहा है सारी जगह पे
सो व्हाट डू यू थिंक कि रिक्रूटमेंट वाले पार्ट में एआई की क्या वैल्यू है, क्या वो उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसके लिए एक चैलेंज बन के आया है? सी एआई ने सोर्सिंग और स्क्रीनिंग को सिग्निफिकेंटली फास्ट बना दिया है फॉर श्योर, लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँ कि अगर आप ये बोलो कि एआई रिप्लेस कर सकता है तो नो, आई डोंट थिंक सो। आई मीन एआई का पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो आई मीन वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट तो कर लेगा, लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग, लीडरशिप असेसमेंट, नेगोशिएशंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, तो ये जो सब है ना, ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज ही होती हैं। तो ऑनेस्टली मैं एआई को रिप्लेसमेंट नहीं कह सकती, ऑगमेंटेशन के लिए यस। ओके राइट। अभी क्या है, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ओपन एआई या फिर किसी और एआई का यूज़ करके, कोई भी टूल यूज़ करके अपने जो सीवी है, रिज्यूमे है, उनको अपडेट कर रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? सी मुझे लगता है कि एआई का अगर रिस्पॉन्सिबल यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बट अगर रिज्यूमेस को प्रोफेशनल बनाना और अचीवमेंट्स को इफेक्टिवली आप प्रेजेंट करना पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम उसको फेक एक्सपीरियंस, एग्जैजरेटेड अचीवमेंट्स या आर्टिफिशियली जनरेटेड एक्सपर्टीज में यूज करते हैं तो ये हायरिंग प्रोसेस में इवेंचुअली एक्सपोज हो ही जाता है। तो एआई प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस विल कम अप इन द एट द टाइम व्हेन वी गो फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यूज। ओके राइट। और अभी अगर आपको एक रिक्रूटमेंट कंपनी या फिर आपको कंसल्टेंसी फर्म खोलनी हो, तो अभी से 8 साल पहले एआई का उतना यूज़ नहीं था, बट अभी अगर आपको वही 8 साल पहले हम लेके जाएं और आपको एआई दे दें, तो आप उसका कैसे यूज़ करेंगे? यार मैं एआई को यूज करती हूँ से फॉर कैंडिडेट सोर्सिंग, ओके। रेज्यूमे स्क्रीनिंग, या मार्केट मैपिंग, टैलेंट इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड आउटरीच। लेकिन जो फाइनल एवोल्यूशन होता है ना, जो उसका फाइनली इवैल्यूएट करने का प्रोसेस रहेगा, वो या क्लाइंट लीडरशिप मैनेजमेंट वगैरह, आई थिंक वो ह्यूमन रिक्रूटर्स के पास ही रहता है। सो आई थिंक इफ गिवन अ चांस आई विल कीप सर्टेन थिंग्स to be in the hands of AI, but human capabilities will definitely be there. ओके। अभी जैसे अभी इंडिया क्या है, वो बिल्डिंग कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा है, राइट? सो अभी ऐसे कौन से स्टार्टअप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो लगता है आपको कि नहीं होनी चाहिए इन हायरिंग? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे हिसाब से जो टॉप स्किल्स जो रहती हैं वो यूजुअली हमारी रहती हैं कि अडेप्टेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इफ आई से कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एआई लिटरेसी, कंटिन्यूअस लर्निंग, तो ये सारी हमारी टॉप स्किल्स रहती हैं। तो जो आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, ये सब चीज़ें, वो आई थिंक इनको इग्नोर करके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इग्नोर करके, आई थिंक दैट इज अ बिगर मिस्टेक दैट गॉट। अभी आपके पास कोई कैंडिडेट आते होंगे लाइक कि हमें हायर कर लो और दे वांट टू बी इन योर कंपनी, सो उनमें आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप किस बेसिस पे उन्हें हायर करते हो? कि उनके पास डिग्री है, या फिर वो कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, या फिर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड ऑल? See, of course, I mean, degree is important, but honestly, there are times wherein, you have to understand, what their background is in terms of, we are looking for street smart people who can adapt to technology quickly. So, other, I think, they are open with that idea, they can communicate well, they can empathize with their people along. So, I think those will be the qualities that I'll take care. I mean, honestly, we can make them learn the skill set that we require for that particular role. But these are few things which needs a strong background from the very beginning. ओके राइट। अभी फ्यूचर वर्कफ्लोज जो है उनके लिए कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है टिल, अगर हम 10 साल की बात करें? See, critical thinking for sure. I mean, that is very much important. Adaptability to new softwares,
keeping in mind, AI is in place. Mhm. So I think somebody who could understand, how to cope up with that, how they could improve themselves. Continuous learning is definitely very important. I think at any part, of our phase of our life we are in, we would require somebody who is open to the idea of continuous learning. So I think future skill set, apart from the technical skills, there are softer aspects which will always remain. ओके राइट। अभी Hmm. जैसे कुछ लोग रिमोट वर्क करते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम एंड कुछ ऑफिस जो कल्चर होता है, तो इन नेक्स्ट 5 इयर्स आपको क्या लगता है कि कौन सी तरफ ज़्यादा लोग चले, मतलब ज़्यादा लोग जा रहे हैं उस तरफ को, लाइक दे वांट टू डू रिमोट वर्क और ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम चाहिए एंड ऑल? हम्म तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल थोड़ा डोमिनेट करेगा. If we think from company's perspective, so I think better productivity, wider talent access, and of course lower infrastructure cost. If I, think from an employee perspective, of course there is flexibility, better work-life balance, reduce commute stress. तो ऑफिस completely disappear नहीं होंगे, but उनको उनके साथ एक कोलैबोरेट हब जैसा सा हो जाएगा. ओके। अभी आपको 8 साल जैसे प्रीमा कंसल्टेंट में हो चुके हैं, राइट? तो 8 साल में आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि 3 नॉन नेगोशिएबल जो क्वालिटीज़ होती है एक फाउंडर की, एक लीडर की, सक्सेसफुल जो होते हैं, वो क्या होती है? फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट इंटेग्रिटी. तो आई थिंक ट्रस्ट बिना लीडरशिप सस्टेनेबल नहीं होती है. ओके। एंड सेकेंड विजन ऑफ कोर्स. तो लीडरशिप को फ्यूचर क्लियरली देखना और उसे कम्युनिकेट करना दोनों ही आना चाहिए. ओके। एंड द थर्ड एम्पैथी. तो लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनका लॉन्ग टर्म पॉसिबल तभी सक्सेस हो सकते हैं कि व्हेन दे अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड. सो आई थिंक दीज विल बी द थ्री मेजर क्वालिटीज दैट आई टेक केयर. ओके राइट। सो अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में या नेक्स्ट 10 इयर्स में आप क्या देखते हैं कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो हायरिंग होगी, या फिर वो हायरिंग ड्राइव करेगा कोई पर्टिकुलर सेक्टर? ओके. सो सी, इंडिया एक टैलेंट पावर हाउस तो बन चुका है. तो अगर हम हाई ग्रोथ सेक्टर्स देखें तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, SaaS, फिनटेक, हेल्थ टेक, क्लाइमेट टेक, EV एंड मोबिलिटी, deep tech, cyber security. So I think demand skilled talent के लिए continuously increase होती रहेगी. ओके। कभी आपको एआई के आने के बाद ये चीज़ लगी है कि अब मुझे ये कैंडिडेट या ये पर्सन की ज़रूरत नहीं है और इसका काम एआई कर लेगा? नहीं, I think as I said earlier कि AI is definitely an add-on, but it cannot replace human completely. तो I think मेरे हिसाब से this will go hand in hand. ओके राइट। सो इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आपकी जर्नी एक रही है, सो अभी जो चल रहा है वो सेम चीज़ चल रही है कि इंडिया के जो यंग लोग हैं वो कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं, सो उस पर आपकी क्या इंसाइट है? I think it's very creative. I think we are living in a country जहाँ पे I think we are surrounded by people who are very creative in their mindset, and definitely we would like to applaud them to what they are doing, and I think this gives them the scalability, but at the same time this gives other people an empowerment and of course opportunities to grow up in their career. So I think the startup culture, new ideas, this creates good human around. I mean, they are basically scalable, and they are actually being part of India's growth also. So I think yeah. ओके। सो अभी प्रीमा कंसल्टेंट में आपके सामने कभी कोई ऐसा फेलियर आया है जब लगा हो कि मतलब अब नहीं होगा? See, honestly, while I was heading HR, there have been chances wherein, you being a working woman and, especially, taking care of your personal and professional life together, there are times, there are challenges that came up then. And finally, I think every,
I think every working woman could relate this to me that while working, once in a lifetime they've come across this thought of leaving everything, to take a piece and relax for a while and then restart their journey. That was the time when Prima was introduced, and honestly, since then there is no looking back. I mean, I've been blessed that this thought came into my mind, and I think मेरे को बहुत सारे पुराने ऑफिस के लोग मिलते हैं and they say कि how is your journey with Prima now. I mean, how good you were earning pretty well, while I left my previous firm, I was earning pretty well. So I was at the peak of my career, and I think when they asked me that, are you able to make something as equal to, what you were doing then? It's like, I don't know, how the money comes in, but all I know is sukoon hai. ओके राइट सो अभी कुछ वुमेन जो है वो ऐसा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती सो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उस चीज़ को बाहर कैसे लेके आएँ कैसे मार्केट में जाएँ डॉल मतलब अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको क्या लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही है? See, I think सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये आ रही है कि there times when working women were considered as that this is an add-on extracurricular that you are doing. So I mean, you have to take care of the home, but if you are working, then that's your personal interest. So that's an add-on responsibility. But I think nowadays people are understanding, families are understanding that it's just not that it's an add-on extracurricular that they are doing. They are earning well, and I think there are a lot of she hirings that go on. And when I say she hirings, of course I mean people, especially women who have taken a break in their career and they want to restart. So there are firms which actually initiate these she hirings wherein they ask them to come back to their work mode. What gap I could see there is that definitely they reach out to those females, but they don't understand that what was the reason why they've left. They've left for a certain reason because they were not able to balance their personal and professional life. They were long working hours. So once they are back in their career, they are still supposed to do the same work, the similar setup that they are into. So what was the logic of she hiring? She hiring would only make sense when you give them that flexibility so that reason doesn't repeat itself. Right. And I think that was the whole sole reason of Prima's existence. So we were in that phase, me and my partner, we both were in that phase wherein we were struggling to manage the personal and professional life, and that was the time wherein we thought, so all the hirings that we do for our own firm, so the recruiters that work along with us, these are all those females who have taken a break in their career, who want to restart. That's very great. And we give them that flexibility. So we understood their reason why they've taken that break, and we give them that flexibility. So it's a complete work from home. So I think therein they could manage their work and their professional, and their home, kids, family, whatever reason they left their job for. And at the same time, they can take break, more questions asked if the work is complete. So I think that's the whole reason we have our team intact from day one. Oh, that's very great. So, if you want to give one advice to 25 years old Mansi, so what it would be? See, I started my career when I was 22. Okay. So I completed my MBA and I started my work. So I think by the time I was 25, I was already a wife. I was already a daughter-in-law, Okay. and I was already a mother. Okay. So I think on my personal side, I've taken care of those things. But yes, I would say 5 years in my journey of you being a 25-year-old. तो मुझे ऐसा लगता है कि the advice that I will give is don't waste your time. If you think there is something right which is waiting for you, go ahead. So go ahead, look for what you are looking. I mean, I'm sure you will succeed
You should not look back to what people will say. If you have something clear in your head, trust your instincts and you will succeed. Okay, so these are the only questions from my side, and it's really appreciate that you have joined me and joined us, joined I am Viber, and you are doing very good. And like you have said, you are hiring women and all. Like I really appreciate that. Thank you so much, Sakshi. It was so wonderful to talk to you today. And I poured my heart out, while speaking to you. It was so comfortable. I've been thinking that, I've been talking to somebody and giving advice, Yes. which might help the younger generation now. Sure. So thank you so much, and would like to have more conversation with you in future for sure. For And sure. I would really like to invite you in our office. We are based in Mohali. So Whenever I plan to come down there, I definitely would like to meet you in person. okay. Thank you so much, Mansi. Thank you so much for your time. Thanks, Sakshi. Okay, Okay, bye. bye bye.